Uh, what are you asking for midterm exam? जी सर, इसका रिजल्ट कब आएगा? Uh, Today there is a meeting at 2 p.m. And I will ask this question to the control examination because he was supposed to release the results for all of you. So जी let सर. yes, and let us. We have a meeting today, and there will be deans and directors, and might be everybody will be there. So it could be a collective sort of things. Uh, because there are exams for those students who are having certain amounts of issues like internet or some other connectivity. So they were not able to appear in the exams. So then they applied for that if they could be given a chance because it was on practice internet online examination. So they might be having this week for them, and then they might be thinking that. But let us see if our meeting will be held at 2 p.m. today. So then I will ask them that what is the reason behind, right? So, who now about 8 students are there. Good, and you might all have sent the group's names. I gave you message today, but I am now uh, watching the list of all of you people. अस्सलाम वालेकुम I सर. think Walaikum Assalam. I think you all have sent the groups. सर मैंने ना एक्सेल शीट बना के सबके ग्रुप्स बना के मैंने आपको सेंड कर दिए थे क्लासरूम में. Right, who is talking? अमार. Amar. Okay, okay. So they have okay. Then CR is very much alert and have a connectivity with his class fellow. ओके सर. Okay, okay. Yes, so just today I was having the groups. Okay, so I will try. Today I will mail you on the classroom the topics. It will be among the topics will be chosen among from the material we have already studied. Okay, and let us see that how could you be able to perform and how could you be able to write it. So I was happy the way we were discussing all three case studies on Friday. So whosoever participated, it was very satisfied that at least you all are working there. So Betaji, without working, we cannot survive. And it's nice that we must be benefited from this online teaching and online sort of discussing of quizzes or case studies or assignments. We don't want, in fact, the university South Asia does not want that any sort of student should suffer because your time should be there, our discussion should be with all of you, and on time you should be having the degrees and you should be having your semesters to be promoted into the next one. So let us uh, you know start discussing. I think now 9 students are there. uh, we have started the uh, function leading of the management uh, last time, and in leading we have discussed uh, human factors. We have started discussing in the leading that human factors, and if you recall those human factors, that that there is a multiplicity roles of a person, that he is not only an employee of your organization, but he or she is having other sort of roles in the society. And then number two, we discussed that no average person. Don't take someone that everybody is average. Everybody in his or her role they are playing. And I quoted the example even from the security guard to the MD. All are human, and nobody is average. And then we discussed, number four.
it was that dignity of the person must be taken into account. So everybody should be given respect. And then if you recall that number 4 human factors we discussed, that was that let us consider person as a whole, because the human is having a beautiful spectrum, weaknesses and the strength, and both should be taken into account. Then, if you recall that we discussed the 2 theories of motivation given by McGregor and Maslow. So McGregor discussed that there are 2 types of persons. Some are average people who are not always liking to work, or there is some push for them, and there is some sort of threat or fear that if they will not work, they will not be having a job anymore. So these type of people McGregor discussed, and then he discussed on the other side that okay, the people are working. They are working by themselves. They are working enthusiastically. They don't need any sort of direction. They don't need any sort of threat. And then we discussed the second theory, that was of hierarchy of needs. Okay, and that is given by Maslow. So Maslow has also defined that a human is having needs. Okay, basic needs. Then first he wants that he should be having a bit physiological need. Then he's thinking that he should be going up and up. And now today is very important topic. That is that motivational, techniques. What are the motivational techniques which we should have to make the people satisfied? Needs must be made satisfied. This we discussed, right? And how can it be? So if we go on the slideshow, we can see that is so today's topic is leading, but under the leading, special motivational techniques, approaches, what they are. So that is coming on your screen as well. Look, certain questions come to mind after looking at motivational theories, the theories which we discussed last time. That again, questions are coming to the mind. That what they mean to the managers. If we discuss the same story with the managers, and what comes to their mind. And number 2, if you see that, what motivational techniques can managers use? Right? That how can they make their employees, they make their subordinates satisfied? And you see that motivation is so complex and individualized that there can be no single best answer you can have, because human wants are unlimited and means are scarce. Every day, is coming, and every day we have different sort of our requirements, our desires, our needs, our sort of things. So therefore he says that motivation is so complex and individualized that there can be no single best answer. Walaikum sir. Walaikum salam. Sir, Salman baat kar raha hu. Hello. Hello, sir. Walaikum Sir, Salman here. Okay. Yes, sir. Okay. I wanted to make a point that everybody has their own motivational needs. Yes. That some people need religious motivation to move on, and some need materialistic motivation. Yes. Okay, so you have come a bit advanced. We are going to discuss, but first of all, I wanted to let you know that the theories we discussed, as very rightly you asked the question. So questions are coming in mind, right? Questions are coming in mind. That yes, sir. And we will discuss when we go on to the next slide.
we will see that there are spirituality as we discussed. So needs will vary from person to person. It will. But let us see that what he has explained, that what motivational techniques are. So there will be 4 techniques we will be discussing. And under those techniques, this will come. We will be discussing the question you have asked me. Okay? So, Okay, sir. okay. So, but therefore, you see, number 3 is that motivation is so complex and individualized that there can be no single best answer. So, here I have used the word individualized. So, individual to individual things will be varied. Okay. Anyway, so next we are going to discuss the major motivational techniques, what they are. Okay. So, number 1 is money. Do you think that money is the motivational technique? No, we will see that not everybody is there, individual to individual, person to person. Okay. So, these techniques varied from. So, but he says, let us see that money is everything. We always say that money is everything. It is really right to say that money is everything. Money can never be overlooked as a motivator. No doubt, no doubt that without money, look, this is COVID-19, coronavirus is a big threat for us. The first thing which is being required, as we discussed last time, that is the physiological needs that we need. And many people, they say that they don't have the money. So government decided that money should be sent to them so that they should be able to, satisfy their. But anyway, money can never be overlooked as a motivator. This I will say. And if you see that money is important in any shape, money can be in the shape of wages, in the shape of pay, in the shape of bonuses, stock options, okay, insurance by the companies, also incentive to the employees, or any other shape paid for performance. Okay, so these are all known as important, motivator for an employee, because we have to be in terms of this that we are discussing the principles of management. And under the principles of management, we are discussing leading is one of the important function of management. As we discussed last time, that what is planning and what is organizing and what is staffing and what is and when we are discussing about the organization, when we are discussing about the companies, when we are discussing about the multinationals, it means that employees are there. And and therefore he has quoted the example that some employees are having the wages in terms money, and in the shape of wages, they are having the money in the shape of pay or bonuses or other things. And then you see that money can also mean status or power or other things. Yes, people have taken this, and it is accepted by the people that if they are having the money, they have a lot of money. Okay, so they will be status conscious and they will be thinking that power. Of course, it is power. If America is rich, so then they claim that we are the superpower. And if other European companies are, because European countries, they have this all multinational there. So money can also mean that status or power or other things there. But let us see, if we go on next, that economists and most managers have tended to place money high on the scale of motivators. All right, yet they say without money, we cannot be rated very highly on the scale of motivators. It is also a big motivator for anyone. But let us see the people who are psychologists, the people who are sociologists, the people who are religious, the people who are other sort of things. They have been known. Behavioral scientists tend to place the same money very much at a low on the scale of motivators.
They say, no, 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 not everybody is living in this world. Not everybody is thinking, in this world that if money is there, then they will be satisfied. No, they say that psychologically and other things, sociologically, they have sent, even religious wise, they have explained that no, money is not having much role as a motivator for the mankind. So, two types of people here: economist, okay, and other managers. And the number two is behavioral. They are known as behavioral scientists. So, yes, you might have seen so many people that they have a lot of money with them. They have all luxuries around. But in my life, you are just children and young people are sitting. But my experience is also there. I have seen so many my friends, mashallah, they are having all luxuries, all things around them. But whenever we have the meeting and whenever we are discussing, so they were unanimous. Most of them were unanimous that money is not everything. There are so many other things other than money. And if you see that probably neither view is correct about money. Yes, we discussed, yeah, about money, and we have also having the views of economists, and we are also having the views of behavioral scientists. But further is that probably neither view is correct about money. However, several things are to remember if money is to be the kind of motivator. Okay, many other things you will have to take into account. And suppose number one is money as money can be important to people who are raising family. Okay. Now again he is thinking that someone is young, yeah, she is having a job, and then of course they will get married and they will be raising their family. So money will be required for them. So this is need based. This discussion is need based now. And if you think further, okay, money is to achieve a minimum standard of living to maximum in terms of small house core or to a luxurious living. Now let us have the example that the hierarchy needs of Maslow. He said very rightly that as the time goes by, as you are catching the age and things are going ahead, so you are having a small house and car, you are happy that if the salary will be increased, you will be earning more. Of course, that it will be at a maximum level. So luxurious living will start then. Money may be at most important for some people, while for others may never be. Your question was there. So as I have already explained to you, and no doubt about this, that it is very important for some people, and maybe for some people it is not important. So many meanings can be taken from this statement. Okay, 12,000 rupees were distributed among the people. So you know that long queues. Oh, I have seen people. Okay, they were just hungry. They were inconvenient just to have 12,000 rupees. And many people are there. Those 12,000s are not important. But look, here is the case that only money, not much money or lower money, okay, maybe are most important for some people. Look, Quran says, "Alhaakum muttaqasuru." तुम्हें कसरत की ख्वाहिश ने गफलत में रखा. So, and also economics में Adam Smith says that human wants are unlimited and means are scarce. So people are thriving. Still, you have no need to let you know. You have the people having a lot of money and still they are dying for. आप देखें वो उनकी लाइफ इसी में गुजर जाती है और वो परेशानी में मर जाते हैं. So, and this was the first. Then the second was that probably quite true that most kinds of businesses and enterprises are to keep money for adequately staff and not primarily as a motivator. Yes, there are business people, multinationals are in the world.
they say that we are earning the money because they have to pay the salaries and others to the staff, and not it is in their mind that because money is there and we are using as a motivator. And and if you go further, there are people, number three, people usually evaluate their compensation in light of what their equals are receiving. So they say, okay, whatever they have contributed to the company, right? Whether it is justified, the earning, the salaries, the money they are drawing from the company. So of course it should be there, and usually it is evaluated. If you are paying the people below their contribution to the company, so something also will be, sort of discouraging for them. So majority of the people, they say, okay, Alhamdulillah, I'm working, I am earning this much salary, and but whatever I'm doing, so I am being compensated. Okay, so this is different sort of techniques the people are having in mind to thinking about that money is really a motivator for them. And if you see number four, money has meaning as a reward for accomplishment and as a means of giving pleasure to the people. Okay, so companies, they think that money is also a reward for the accomplishment, whatever they have accomplished, whatever sense of achievement they have. Okay, and so they think and they feel pleasure that this my salary is there and sort of things around. However, money is appropriate motivator. The final is, आप जरा देखें तो at the initial stage we discussed that money, the motivation is a very complex, okay, and it is not easy to understand. And money is not a motivator also in terms of economist and in terms of behavioral scientist. However, money is appropriate motivator if companies use merit. This is, look, concentrate on this, these words, that if companies use merit pay based on performance, if according to performance people are being paid, so this is the height of motivation. Okay, and you can go even beyond that when you are paying them beyond that salary, beyond that fixed pay. So definitely it will be a big motivator for the employees as a bonus. Some incentives are also there. And maybe suppose if 10 employees are working with your organization, or let us see 10 are at the top, and you announce that among 10, whosoever will be contributing a lot, or let me use the word which we discussed, efficiency and effectiveness, right? Whosoever will prove him or herself efficient and in a minimum time and minimum amount of money, if someone is effectively result oriented, and if he or she is, achieving the goals and objective with a minimum time and minimum sort of money, so definitely he or she should be given certain amount of, incentives. Look, so today our lecture is special motivational techniques and approaches. And the first technique we discussed, that was a money, about money, what things are in our mind, what we think about this. So we discussed in detail both the ways that it is the utmost importance, having utmost importance for the people. And maybe for some people, this is not very much important. So what other things employees require? Okay, what other things can become motivator for the people who should be happily working with your organization? And that is the other technique, that is quality of working life. Okay, wherever he or she is working, we have discussed already, that the atmosphere, the environment should be ideal.
The people should be feeling satisfied that the environment where they are going to work, their office, their factory, their belongingness, the attitude of the people, their jobs has been designed to them, and their job development has also been defined. That when you will spend 4 years or certain amount of time, then you will be promoted. Your salary will be promoted. So this is the ideal environment. So quality of working life also, a good motivational technique, a big motivator for the employees, that they know each and everything. No need to ask any their peers or some other people that उसकी मेरी प्रमोशन कब होगी, मेरी सैलरी कब बढ़ेगी, ये मेरी जॉब मुझे नहीं पता मैंने करना क्या है. So the good companies, the corporations, they have quality of working life with their organization with regard to job design, job development, and job enrichment. So the abbreviation is QWL. We may say KUL. KUL is a field of inquiry and action, both industrial, organizational, psychological, and psychology. Industrial and organizational psychology and the sociology. I have already discussed with you in the behavioral. They are the behavioral scientists. Ultimately, the human is living really psychologically. He is thinking that this much my amount is, this much is my bank balance, and this much industry I have, and this much my houses, and okay, but nothing is with him. But anyway, psychologically and sociologically, he or she thinks, as we discussed in the Maslow's hierarchy of needs. उसी का extension हम discuss कर रहे हैं. तो esteem needs, तो वो sociologically वो अपने आप को समझते हैं. जैसे अभी we discussed under the money that status conscious people are, that so sociologically and psychologically, they must be satisfied when working in the industry or in an organization. Okay, so both things should be inquiry and action. That both industrially and organizationally, psychology and sociologically, they both are there. It means that organization is working in a very beautiful way. They have created an excellent environment. Whosoever is working, they are all happy. They are not dissatisfied. So definitely, it is a big motivator for the employees working there. And if you see the same quality of working life in the organization, so government agencies have regarded coal as a promising means of increasing productivity and reducing inflation. Of course, when someone is happy, so definitely productivity will be increased. If someone is very much satisfied from salary point of view, from designation point of view, from job point of view, from the behavior and the attitudes of the bosses, okay? So they are having this thing in mind, as we discussed in the, there, that let the people should, do mistakes. Let the people should be having empowerment with them. Okay. So now the next point, as a motivator, as a motivational techniques or approaches is participation. Okay. So this is an ideal. Okay. We will discuss when we will go on the next our topic that will come a full chapter, leadership. So you will see the leaders are having many styles, and very impressive style the leaders they have is participative style. Same is here we are discussing that the best one of the best motivational techniques is participation. Okay, and if you recall, I have also mentioned in this slides that delegation of authority and empowerment, these are very important. Okay, so you delegate the authority to the people. Let's trust on them.
and we discussed delegation of authority में ये सारी चीजें हमारे points आए थे कि trust the people. Let us consider them trustworthy for you. So definitely they will be having ownership. Yes, they will show ownership to the organization. कि मेरा एक घर है जहां मैं रात को जाता हूं या छुट्टी होती है, after the duty hours I go to him, and my next home is my company and my organization. So this will happen when participation of the employees will be there. So look, good motivational techniques and is taking can be taken as a motivator, participation. And C number 1 is participation has been given strong support by motivation theory and research. So he says that research has been conducted how to motivate the people. And we have discussed already. Let us take another example also. So you have seen the people, they have made their business motivational speaker. Okay, here is the scenario entirely different, my dear. Here the motivational theory and research, the people who are also working practically, physically, they know how company can be run, who are known as your bosses or who are known as your managers there. So they have gone through this practice and then they started motivating their employees. So they in fact said that their participation is very important in the decisions. Okay, so that could only be possible as we discussed last time. Okay, in the authority and power line and Stroff chapter was there. We discussed that authority and power. So if empowerment is given, a big freedom is given to the people that they can decide, and if they have some idea in mind, so they can disseminate to the bosses and they will appreciate. So the next, if you see that when the participation is there and employees are being encouraged, okay, they are being given incentive, they are being named that, okay, such and such person gave this idea and we are now going to implement. So this is the recognition of someone. Okay, the big thing missing in the psychology is recognition. Let us see that the relationship of parents and their sons and daughters, very very important relation. बड़ा मुश्किल है कि माँ और बाप से हम superior हो सकें. But even then we have seen psychologically sometime, even sociologically sometime, then when parents are not recognizing their sort of sons or daughters and vice versa, if the sons and daughters are recognizing, so things will be very much varied from that relationship that should be there. So the Lord, look, if you come out of this and in the organization, if someone is being recognized because of his or her contribution, so it will pay a lot. So participation also give name to the person, and whosoever is participating in a constructive way, okay, as a contributor, not simple as a doer, so he or she must be recognized. Recognition बहुत जरूरी है, ऑनर देना बहुत जरूरी है. तो ये इंसान की यहाँ मनी जो है वो दौलत जो है पैसा जो है वो पीछे रह जाता है. डेजिग्नेशन भी nobody is going to there. और जब किसी को आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि ओ यार जबरदस्ती आपका आइडिया था और आपने मेरी हेल्प की. So even the driver is there. I have come across with this sort of experiences with me. If the clerk is there, okay, I've been director general, I've been director, I was okay on a very key post there. तो जब भी मैंने किसी से ये बात की कि यार आज तो आपने कमाल का ऑफिस मेरा बना दिया है, तो मैंने जब अपने पीएम से ये बात कही कि यार आज तो तुमने ये जबरदस्त चीजें बना दी हैं, तो उसी से वो फिर started working. And then is participation appeals to the need of affiliation and acceptance.
अब मैं इस पे बहुत सारा बोल गया हूँ कॉग्निशन के ऊपर. Of course, when participation is open, it will appeal to the people. They will be having much affiliation and their acceptance is there. So it was the third technique of motivation, which should be taken into account. And number four, if you see that other rewards considerations are also there. Look, yes, we discussed that money is, uh, motivational technique. Money can be taken as a, motivator. Then not only money, unless a beautiful environment is there, that we discuss their quality of working life. And then the third, just we finished that was that trust the people and allow them to participate in the company's decisions. And now the fourth one is that other rewards consideration can also be taken into account. What are those? Implicit in most motivation theories or intrinsic and extrinsic. जो अभी आपका सवाल था, आप इसमें आ जाएं कि इंट्रिंसिक आप समझते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. ओके, इंटरनल आपका जो स्पिरिचुअलिटी जो हमने डिस्कस किया, ये इंट्रिंसिक पे आएगा. ओके, एंड एक्सट्रिंसिक जो टेंजिबल होता है, इंट्रिंसिक जो इनटेंजिबल होता है. ओके, तो स्पिरिचुअल मामला जो है हमारे इंट्रिंसिकली वी डिस्कस एंड एक्सट्रिंसिकली. ओके, अभी हम नीचे देख लेते हैं वो क्या है या क्या नहीं है. इंट्रिंसिक रिवार्ड मीन a feeling of accomplishment or even self-actualization. Again, go back to the Maslow's theory. The last needs, uski hierarchy of needs थी self-actualization, maximum satisfaction of accomplishment, of sense of achievement. एक आपको बगैर बताए जब आप ऑनेस्टली काम कर रहे होते हैं, आप जैसे हमने मनी में पढ़ा उसमें कि परफॉर्मेंस बेस्ड जब आपको अवार्ड मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं, आपको तनख्वाह मिलती है, आप उसी लिहाज से सोचते हैं. और जब आपकी रिकॉग्निशन होती है, पार्टिसिपेशन आपकी होती है, तो ये चीजें जब मिलती हैं तो एक अंदर से बड़ी खुशी होती है. सो ये फीलिंग जो है इंट्रिंसिक, these are based on spirituality. Okay, and one should be honest, one should be dedicated, one should have the reward in terms of so many sort of things. तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज है. तो उसने कहा है कि one should not ignore this one, कि आपने सिर्फ उस एम्प्लॉइज को, he is having a car, he is having a good salary, he is having a good designation, सारी चीजें उसके पास हैं, but he is not having the honor, he or she is not being recognized. Okay, there is an issue of affiliation of acceptance. तो maybe जो उसकी इंट्रिंसिक मामलात हैं, फीलिंग जो है उसकी अंदर की फीलिंग जो है वो खुश नहीं है, having all material tangible things with him or her. So motivational technique. Yes. So I have a question, sir. There are people that are spiritual leader, but they don't actually believe in higher power or God, but they teach people spirituality. In what category they do belong? No, category of what? Like, You are asking. how, if they don't believe in higher power or any sort of God, how do they feel spiritually awakened, or how do they feel enlightened? Yes. This is called intrinsic. Intrinsic rewards mean that they are satisfied whatever they are working. But look, एक चीज आपको मैं कहूं कि इंसान के बारे में ये कहा गया है कि when he or she will die, जब उसकी, मेरा ख्याल है अगर हम अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, तो फिर मैं जरा आ जाता हूं आपके साथ. Okay, sir. Okay. It's a good question. So there are two consideration: intrinsic reward and extrinsic reward. अब x से पता चल रहा है आपको, इन से आप इंटरनल ले लें, x से आप एक्सटर्नल ले लें, ताकि आपको इतना वो तरद्दुद ना हो याद करने में. Extrinsic rewards mean benefits
आपको जो मिलते हैं, रिकॉग्निशन जो अभी हम उसे डिस्कस कर बैठे हैं, स्टेटस सिंबल जो है वो हम चाहते हैं कि हमारा हो, एंड ऑफ कोर्स मनी। ये चारों चीजें उसने कहा है कि बेनिफिट्स, रिकॉग्निशन, स्टेटस एंड मनी, ये एक्सटर्नली इंसान चाह रहा होता है कि बज़ाहिर जैसे हम लफ्ज बोलते हैं, जैसे आपका सवाल भी इसी में आ रहा है, वो इसी में रहते हैं कि हमारा जो सिलसिला जो है वो नो वी विल कम टू दी। और आज का जो टॉपिक है वो मैं चाह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम सवाल पूछें, क्योंकि लाइफ इज कमिंग अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक यही आप लोग सुनते हैं, अब आप ग्रो अप हो रहे हैं तो आप कहते हैं कि पीपल से यार पैसा है तो सब कुछ है, ओके, और ये नहीं होगा तो हम इस लिहाज से आगे नहीं जा सकते। तो इस लिहाज से आई थिंक कि ये बेसिकली फीलिंग का इसमें असर है। तो अब मैं आता हूँ आपकी तरफ। आपको क्वेश्चन था कि दे आर द पीपल देयर, जैसे हमने डिस्कस किया। Yes, sir. It varies from individual to individual. Not everybody is seeking sort of money, but of course basic needs are there. So people are taking as a need. Okay, people are not taking as a I should have this much money and I should go for this. So I was going to quote an example. Suppose आपको कहा जाता है कि बंदे की रूह परवाज कर जब जाती है तो बंदे की डेथ हो जाती है। इसका मतलब है कि रूह इज इमॉर्टल, ओके, द स्पिरिट इज ओके। ये लफ्ज वहीं से निकला है, स्पिरिचुअलिटी, कि आप अंदर से किसी के मुतालिक क्या फील करते हैं, ओके, एंड इट विल नेवर कम टू एनीबॉडी। कोई किसी इंसान के नजदीक ये चीज नहीं आ सकती unless he or she is dedicated, he or she is committed, he or she is honest, he or she is working. Okay, I am working here for the organization, my boss is watching me. Okay, it is there, it should be there. But above this boss, if someone is having in mind that my God is also watching me, am I working honestly, am I really paying to the companies, or okay, to justify my salary? तो अगर उधर उसने सोचा था कि people are taking money, whatever they are contributing to the company is paying them according to their performance. लेकिन कंपनी के मुताबिक भी ये है कि आप सोचेंगे तो क्या जो कंपनी आपको सैलरी दे रही है या कंपनी आपको ऑनर दे रही है, आर यू रियली जस्टिफाइंग विद दैट? तो ये जब चीजें इंसान के ज़हन में आ जाती हैं तो वो काम भी करता रहता है, उसको अल्लाह ताला रिज़्क भी देता है, या she is enjoying the Lord. Does it okay? Doesn't this come in the category of morality? Yes, of course. Moral values होंगी तो मामलात ये सारे चलेंगे ना। जो हमने पढ़ा था बिजनेस एथिक्स में, तो हमने उसमें इसी चीज को डिस्कस किया था कि एथिकली वी आर बाउंड कि हम जो है एथिक्स बोथ द साइड, एथिक्स ऑफ द कंपनी एंड एथिक्स ऑफ द इंडिविजुअल। यस, तो बिल्कुल ये मोरालिटी में आता है। तो दिस इज ऑल आज जो हम इसको यानी कि डिस्कस कर रहे थे, तो उसका यही था कि ये चीजें जो है ये इंसान की लाइफ में आती हैं, और इस लिहाज से वो इंसान हमेशा आप देखें डाउन टू द अर्थ रहता है, उसको कोई परवाह नहीं होती। एंड यू हैव सीन द पीपल हैविंग ए लॉट ऑफ मनी, ओके, हैविंग सो मेनी प्रॉपर्टी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट यू सी देम, दे डोंट हैव द ऑनर, they don't have the dignity. People are not accepting them from the core of their heart. If you see that belongingness, Maslow जो हमने दी थी या अभी हम, okay? Yes, sir. Someone is going to ask question? No, sir, all good. Okay. So, तो इसी को जब हमने इसको मैस्लो की नीड्स को जब हमने डिस्कस किया, तो अभी भी हमने डिस्कस किया है कि इंसानी ख्वाहिशात जो है वो लामहदूद है और वो आगे आगे चलता जाता है एज द टाइम गोज बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल हिज और हर डिमांड्स इज दैट आई शुड हैव अ स्मॉल हाउस, आई शुड हैव अ स्मॉल कार। और जब हमने दोस्तों को देखा तो फिर वो कहने लगे नहीं यार अब ये घर बड़ा छोटा हो गया है और अब ये गाड़ी भी छोटी है, वांट टू चेंज। वो तभी उसके ज़हन में आता है बिकॉज नो ही इज अर्निंग।
तो एक चीज आप लोग ज़हन में रखें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेकिंग मनी एंड अर्निंग मनी। ये मैं कहा करता हूं कि अर्निंग में कोई आपको कदर नहीं है, देयर इज नो हर्डल, कीप अर्निंग, ये बहुत सवाब है। जितना पैसा बनाओ कोई गुनाह नहीं है, प्लीज। बट ऑन द अदर वे, नॉट थ्रू रॉन्ग वेज, there should be certain amount of footings of that money. If Bill Gates is a rich person, if Steve Jobs जिसको हमने डिस्कस किया वो अमीर था, या many other people in the world, अगर वो अमीर हैं तो हम उनका रिच होने पे उनकी ऑनर भी करते हैं, इसलिए कि उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि they were money launderer and they made the money and they deceived their country and they made the money through wrong ways. तो उनको कोई पसंद नहीं करता, हालांकि पैसा दोनों के पास है, both have the money, but the money must be earned. अब अर्निंग में जब पैसा आता है तो आपके साथ जितने लोग होते हैं they also benefited from. फिर जब आपकी वजह से, आपकी कंट्रीब्यूशन से, याद रखें, if so many people are earning money, they are having salaries, they are having wages, and they are improving their living style. So you must know that Allah is very much happy with those people. Because of them, so many families and so many people, they are having good living. तो अल्लाह उस इंसान पे बड़ा ही खुश होता है जिसकी वजह से वो कंपनी बनाता है। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप होती है, फिर वो पार्टनरशिप में जाते हैं, फिर वो जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं, फिर वो नेशनल कंपनी बनती है, फिर वो मल्टीनेशनल बनती है। अब यू थिंक दैट विद कोका कोला हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन द वर्ल्ड। आप देख लें, उसकी मिसाल देख लें। आप इसी को ले लें, ये जो एप्पल का हमने केस डिस्कस किया, उसमें आप एप्पल पूरी दुनिया में है, कितने लोग जो हैं वो उससे उनकी नौकरियां हैं और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। तो कोई बंदा ओनर ऑफ दी एप्पल को, ओनर ऑफ दी एनी कंपनी को जो मल्टीनेशनल है, उसको कोई बंदा बुरा नहीं कहता, इसलिए कि दे अर्न द मनी एंड दे अर्न द मनी बाय कंट्रीब्यूशन। ओके, दे कंट्रीब्यूटेड and because of their contribution, because of their sort of these things, people got employment with them, and so many people are living throughout the world. तो बिजनेस करना जो है, हाथ से काम करना जो है, उससे इंसानों को जब सुख मिलता है तो अल्लाह अलमाइटी उस पर खुश भी होता है। तो दो ही तरीके हैं जो आपको मैंने बताया कि नेवर गो फॉर टू मेक मनी, ऑलवेज गो फॉर टू अर्न मनी। और अर्न मनी की नियत ये होनी चाहिए कि ओ माय गॉड, ओ माय अल्लाह, आई हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस, इसमें बरकत डाल ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो ज़कात लेने की बजाय मुझसे वेजेस लें। अगर आपकी ये नियत हो जाती है तो इट इज देयर ऑन द स्पिरिचुअलिटी। ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर होती है कि आपका ये ज़हन है कि मैंने ये कंपनी बनानी है, इससे लोग जो हैं वो यहाँ कोई गरीब ना रहे। People should be working and they should be earning salaries, earning wages, earning bonuses, earning so many things there. तो आप देख लें, जब मुआशरा इस किस्म का बन जाता है तो फिर वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप बनता है, then we all wish to go to Europe. फिर वो अमेरिका बनता है, then we all wish to go to America. और हमें होता है यार कि हमारे ऊपर कोई डिजास्टर आया है, हमारे ऊपर कोई अर्थक्वेक आया है, तो पैसा अमेरिका से आ रहा है, देखो हम we are suffering from, और वहां से why not we? And we were about 800 years the Muslim ruled the Spain, और उन्होंने वो आप इसकी हिस्ट्री पढ़ो, जरूर गो टू द हिस्ट्री, आप देखें कि मुस्लिम्स क्या थे। क्या वो जबानी जमा खरीद से बात करते थे? they were just simply delivering the lectures and motivational lectures and this and that? No, they were botanists, they were geologists, let me say they were behavioral scientists, they were big businessmen, they were big trader। और ये इतने वो जबरदस्त ट्रेडर थे। इंडोनेशिया आपका, मलेशिया आपका, ये मुसलमानों ने ही आबाद किया, और यहाँ मुसलमान जो थे वो ट्रेडर बन के आए थे। तो दे केम हियर एंड दे स्टार्टेड बिजनेस विद ऑनेस्टी। वहां मिलावट कोई नहीं होती थी उनके बिजनेस में। और अगर कोई बंदा साल के बाद भी आता था कि ये मैंने एक चीज आपसे खरीदी थी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो वो कहते कोई बात नहीं, आप वापस कर लें अगर आप ने। और यहाँ हमने लिखा होता है कि
आपने अगर हमसे माल खरीदो, माल वापस नहीं होगा। ओके, तो दिस इज नॉट द स्टोरीज देयर। तो एनीवे, लेट अस कट इट ब्रीफ दैट सेटिस्फैक्शन जो है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन फैक्टर जो हमने लीडिंग में शुरू किए हैं इनके लिए, या जब आप आगे जाएंगे तो उसमें जब हमने जो डेफिनेशन भी पढ़ी है कि आप यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस द पीपल, you cannot influence the people unless you are going to satisfy their needs and their wants. जब तक आप उनकी needs और wants को satisfy नहीं करते, nobody is going to be influenced by you. तो हमारी जो leading की definition है, leading की definition ये है कि to influence the people so that, ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया था, so that they should contribute. उन्होंने ये नहीं कहा so that they should be working simply, they should contribute to the organization. ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल बनती ही तब है, दुनिया में वो पूरी दुनिया में स्प्रेडिशली हो जाती हैं कि वहां जो लोग हैं, ईच एंड एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग. कंट्रीब्यूशन इज समटाइम मोर देन सिंपली डूइंग. क्रिएटिवनेस आती है, सारे लोग एम्प्लॉइज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके आइडियाज को ऑनर किया जाता है, और फिर वो कंपनी जो है वो देख लें आपके देखते देखते वो कहां तक फैल जाती है. तो हमारा जो टॉपिक है, ये जो हमने शुरू किया हुआ है, द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये लीडिंग है. इस पे हमने ये चीजें सारी आज डिस्कस की कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट लेक्चर्स में ये देखा कि व्हाट इज लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, ओके, टू गेट द वर्क डन. फिर हमने देखा व्हाट ह्यूमन फैक्टर्स आर देयर, वो हमने 4 डिस्कस किए. और फिर हमने उसके बाद का जो हमारा था वो हमने पढ़ा कि ये है क्या बात, साइकोलॉजिकली देखे तो सही इसको कि ये लोग इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं. तो हमने देखा कि वो दो हमने साइकोलॉजिस्ट को उठाया और उन्होंने कहा कि यस, लोग जो हैं वो थोड़े से लेथार्जिक भी होते हैं, उनका काम करने को जी नहीं चाहता, दे आर एवरेज पीपल, लेकिन आपने उनसे काम लेना होता है. और दूसरी किस्म के लोग होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं. ये बड़ी खुशी होती है कि जब लोग ऑटोमेटिकली काम करते हैं, उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती. और आज का जो हमारा लेक्चर था तो हमने कहा ठीक है, ये तो इंसान की बेसिक नीड्स हैं, ओके, उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या ये वाकई हकीकत है, इज इट रियलिटी विद अस दैट इफ मनी इज देयर एवरीबॉडी विल बी सेटिस्फाइड. तो देन वी सॉ ऑल द आर्गुमेंट्स विद रिगार्ड टू मनी. और उसके बाद जो हमने लिया, जो सेकंड उसका पॉइंट था, वो हमने लिया कि उनकी जो है वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, टोटल क्वालिटी ऑफ उसकी जो है क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ ऑर्गेनाइजेशन की वो बड़ी आइडियल होनी चाहिए. और अगर वो होगी तो दैट कुड आल्सो बी ए गुड मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉइज. नॉट नेसेसरी के जो हम only we should concentrate on salary or on money. Then we, on the third, we also discussed the motivational technique, that was participation. Okay, encourage them to participate. And we have already discussed under the authority and power chapter, यहाँ हमने ये कहा कि the employees should be made empowered. Okay, if they are going to contribute something in terms of ideas, so do encourage them, do recognize them, do accept them, do realize them that we have very strong affiliation with you. So ये चीजें हमने इसको डिस्कस किया. और जब हम लास्ट में गए तो हमने फिर देखा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हम आ गए कि इंट्रिंसिक वैल्यूज और एक्सट्रिंसिक, इन दोनों को इंसान देखता है कि वो अंदर से कितना सेटिस्फाई हुआ है, हाउ मच ही और शी इज हैप्पी. और वो जब फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट जब वो रखेगा और सेंस ऑफ अचीवमेंट जब उसको एहसास होगा कि मैंने कुछ यार किया है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो जबरदस्त रहेगा. द बिग मोटिवेटर होगा, दैट कुड बी द बिग मोटिवेटर. ओके, मोटिवेशनल टेक्निक होगी, अप्रोच होगी. और फिर हमने देखा एक्सट्रिंसिक जो है फीलिंग जो है या वैल्यू है वो इंसान की होती है. ऑफ कोर्स वो उसको सैलरी भी चाहिए, उसको गाड़ी भी चाहिए, बाजार चीजें. अब 2 इंसानों को मैं दे लेता हूँ, फिर मैं आज इसको खत्म करता हूँ. ये 2 लोग हैं, दोनों के पास इक्वल स्टेटस है, इक्वल डेजिग्नेशन है, दे आर पीयर्स, इक्वल सैलरी है, ओके, इक्वल लग्जरीज है अराउंड, बट बोथ आर नॉट सेटिस्फाइड. आप दोनों को मिलकर देखें, एक कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड, एवरीथिंग इज अराउंड मी, और आप दूसरे को देखें तो वही उसके पास चीजें हैं. तो इनसे हमने बहरहाल
तब निकलेंगे। इसके निकलने की एक ही टेक्निक्स है कि वी शुड बी ऑनेस्ट, वी शुड बी डेडिकेटेड, वी शुड बी कमिटेड, वी शुड थिंक दैट ओके, it is the right of my bosses, it is the right of my right of my management, that they should look after, they should watch me. But internally someone is created of us, वो भी हमें वॉच कर रहा है, और वो सिर्फ चीजें आपकी नीयतों को वॉच करता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक्शंस आप कर रहे होते हैं, अमाल आप कर रहे होते हैं, नौकरी आप कर रहे होते हैं। तो दैट ऑल डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ योर डेडिकेशन, योर ऑनेस्टी, योर कमिटमेंट। इससे फिर आप इंटरनली स्पिरिचुअली भी यू आर ऑल हैप्पी देयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे व्हिच आई वांटेड टू डिलीवर अ लेक्चर। एनी क्वेश्चन? हाँ भाई, सारे उठ गए आप लोग? 10 आर देयर, लेट मी चेक हु आर देयर। Yes, sir. Okay, Anik is there, Heather is there, Javeria is there, Kinza, Myra, मोहम्मद अरसलान। अरसलान, उस दिन जब हम डिस्कस कर रहे थे तो लेट मी आस्क यू, अनीक इज टुडे। अनीक, आपने बड़े कम लेक्चर अटेंड किए हैं, व्हाई इज इट दैट? हेलो, अनीक इज नॉट हियरिंग मी? Assalamu sir. How are you? Sir, I'm good. How are you? I'm fine, but you're not regular in attending the classes. Why is it so? सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आ रही थी, तो जब आती है तो मैं तो सर सारी क्लासेस ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। Okay. But you do tell Amar or someone that you are attending my classes. बेटा, ये attendance को सर तो मैंने अमार से बात होती रहती Okay. And what about the cases which I gave you people? So have you got prepared for that? Anik? यस सर। Yes, जो मैंने केस स्टडीज दिए हुए थे तो उसकी आपने तैयारी की थी? सर उसमें मैंने आधे से ज्यादा पढ़ लिए थे, मैंने स्टडी की थे। ओके, ऑन फ्राइडे आप रेडी रहे। मैं वो दोबारा था कि आप लोग 5 to 6 वर एबल टू पार्टिसिपेट इन द ठीक हो गया लास्ट। सर। तो आई वांट दैट लेट मैक्सिमम शुड आप पार्टिसिपेट कर लें, ताकि Yes. मैं जब आपको क्विज के और असाइनमेंट्स के नंबर दूं तो दैट शुड बी जस्टिफाइड। एंड Yes. Heather was having some internet connectivity. It was जी Heather. सर। यस, अब आपकी कनेक्टिविटी आई ठीक है? नो सर, बात थोड़ी लो है, बस कभी ठीक होता है कभी लो होता है फिर। आपने वैसे केस स्टडी के जो जवाब दिए हैं वो बड़े आइडियल, वो बड़े जबरदस्त हैं। मैं आई वांटेड टू हियर फ्रॉम यू, और आपका वो इशू बना हुआ है उसका, तो ट्राई जी। करें उसके लिए। जुवेरिया से अच्छी बात हो गई थी, किंजा से जबरदस्त बात हो गई थी, मायरा से जी बात जी। नहीं हुई। मायरा इज देयर? हेलो, ओके अरसलान, ओके मायरा इज देयर इज। यस सर। हाँ बेटा, क्या हाल है? ठीक है? जी सर, आप ठीक है? I'm fine. So have you heard the lecture today? यस सर। Okay. There is a difference between hearing the lecture and listening the lecture. तो listening किया था या कि hearing किया था? सर सुना था। Okay, आपने अच्छा डिप्लोमेटिक जवाब दे दिया। Anyway, कनेक्शन से प्रॉब्लम हो रही थी तो कभी बंद भी हो रहा था तो कभी ऑन भी था, लेकिन सुना था। okay. And अरसलान, सर इसके माइक का शोर इसकी आवाज से ज्यादा है। वही ना, तभी तो मैं नोट कर रहा हूँ ना। आपको मैंने कहा तो हुआ है कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टीचर है, ये व्हाट यू थिंक ऑफ मी? मैं हर चीज को समझता हूँ तो नहीं साइकोलॉजिकली? Yes, I sir. understand my students, but sometime I recall my time when I was at your stage. तो मैंने कहा कोई नहीं यार, ये चलता है, खैर है। राइट? अच्छा, इसके बाद जो है
Kamal is always Okay, sir. present. Yes, Inam Arshad. Hello? Inam is there? अस्सलाम वालेकुम सर। क्या बात है, बड़े सुस्त नजर आ रहे हो। Sir, my internet connection is not good right now, so But now I'm listening your voice. Energetically you should speak. I want you all should be energetic. ये जब आपकी प्रेजेंटेशन होती है, मैं तमाम टीचर्स का, आई एम एज ए डीन, जितने टीचर्स आपको लेक्चर दे रहे हैं ना, आपको बताऊं तो उनको हम सुन रहे हैं। तो इंटरनेशनली प्रेजेंटेशन स्किल जो है उसके ऊपर जब आप लेक्चर देते हैं तो ये अल्फाज वहाँ इस्तेमाल होते हैं कि द लेक्चर वाज डिलीवर्ड, ओके, द पर्सन वाज वेरी एनर्जेटिक, वेदर लाइवली, ओके। क्योंकि जब तक आप ये चीजें नहीं देते तो उस वक्त तक आप, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू माशाल्लाह, तो यू शुड शो योरसेल्फ दैट यू आर ऑल एनर्जेटिक, ओके। सो बाकी दोस्तों की लिस्ट है सारे की। तो एनीवे हसन रजा भी अभी नजर आ रहा था। तो इंशाल्लाह आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड whatever we have discussed today, okay? So we will discuss the next time. Anybody is having any question, please? सलाम सर। स्लाइड सेंड कर देना, पहले वाले भी जो रीड किए और ये जो आज भी। अच्छा, अब जो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंच रही है? नो सर, अभी तक तो नहीं आई। नहीं यार, सबका लेक्चर जो मेरे हुए हैं उनकी नहीं पहुंची। ये कैसे? सर आपने अपलोड ही की है। अपलोड की है? अच्छा, ओके, मैं फिर उनसे पूछता हूँ। मैं जो वो लेक्चर भेजता हूँ ना आईटी वाले, तो आई विल आस्क देम कि उनको ये फिर आप लोगों को दे दिया जाए। बट दिस इज ऑल ऑलरेडी, द मटेरियल इज विद यू। आपने लीडिंग वाला चैप्टर खोलना है और उसको पढ़ना है, ये पॉइंट्स हैं वहाँ। लेकिन इवन देन आई वुड लाइक के अगर मेरी रिकॉर्डिंग आप सबको मिल जाए तो ओके। यस सर। ओके, बड़ा स्लोली आपने जवाब दिया, मैंने कहा शायद आप चले गए। ओके बच्चों, एक तो माशाल्लाह आप लोगों ने सब ने आज मैं आई एम वेरी हैप्पी। इसका मतलब है कि आपका नाश्ता जो है वो सुबह 3:30 बजे होना चाहिए, क्योंकि आज आप रोजों के साथ सारे हाजिर हुए हैं। 11-12 बच्चे जो है वो आज they are in attendance. So anyway, so next time अब आज का जो हमारा ये 2-3 लेक्चर में हमने कवर किया वो है लीडिंग, और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा लीडरशिप, व्हाट लीडरशिप इज। ओके सर। ये सारा जो है वो हायरार्की ऑफ नीड्स के ऊपर जा रहा है। तो लीडिंग में हमने चीजें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस व्हाट इज लीडरशिप, एंड सी यू एंड अल्लाह हाफिज। ओके, गॉड ब्लेस यू। अल्लाह। Sir, I have a last question. हाँ, ओके। So, just like marketing, in order to be a motivational speaker, you have to target your as well, right? आप मुझे सजेशन दे रहे हैं कि आई शुड आल्सो बी मोटिवेशनल स्पीकर? Yes, sir. Sir, आप हैं already. You are. हाँ ना, मैं आई वांट माय टारगेट मार्केट, माय टारगेट एंड माय सेगमेंट इज माय स्टूडेंट्स। Yes, sir. I want you all to be made, mashallah, satisfied. I'm there. You might have watched me on Google. मेरे YouTube के ऊपर कोई लेक्चर पड़े हुए हैं। तो I'm not simply unknown. So I don't want to be having another profession. तो अगर आप जितने मेरे बच्चे हैं बेहतरीन मुझसे सीख जाएं, बेहतरीन मुझसे पढ़ जाएं, बेहतरीन आपकी एक डेवलपमेंट हो जाए, आपकी एक तरबियत इज जो है आपकी ट्रेनिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट नियर मी, एंड आई आल्सो प्रे फॉर यू एज वेल। Thank you, sir. ये आप जो है माशाल्लाह वो Thank you. ये आज मैं आपको आपका टीचर इस शेप में नजर आता हूँ, तो थ्रू आउट माई लाइफ आई कैन क्लेम
I've been working on very big keyboards there. लेकिन you go to ask my organization, they all feel pride कि वो बंदा था यहाँ. ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है. और आज भी you will कॉम्प्लीमेंट तो भूल गया सर आपका. हेलो. शर्ट और टाई का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा यार, ये तुम हर दफा मेरी जो हो बड़े जबरदस्त बच्चे मतलब तारीफ करते हो, फिर मैं पूरा सर आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है. सर आपको मक्खन लगा रहा है. हेलो, कौन बोल रहा है? सर किंजा बोल रही है. हाँ किंजा बेटे, क्या कह रही थी? सर किंजा कह रही थी सलमान बटरिंग करता है हर दफा. नहीं मायरा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ओके, यू आर राइट. हाँ ये अच्छा इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. तो इसका मतलब है कि आपके नजदीक ये मेरी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है. नहीं सर, ऐसी बात नहीं है लेकिन सलमान हर दफा ऐसे ही कहता है और बाद में कहता है. इट्स वेरी नाइस. ये क्या बात है? ऑन द लाइट साइड भी इट्स गुड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग. ये होता है Yes, जब sir. हम भी मैं आपको बता दूं, जब हमारी भी लाइफ में वो टीचर, उनके सारे टीचर ही माशाल्लाह बड़े अच्छे थे, लेकिन हम हमेशा उस टीचर को कभी नहीं भूले सारी लाइफ में कि जो पंक्चुअल होते थे, ऑन टाइम होते थे, रेगुलर होते थे, डेप्थ ऑफ नॉलेज के साथ आते थे और अपीयरेंस उनकी बड़ी अपीलिंग होती थी. और उस सर ये बात तो है कि आप हैं. मैं सारी क्वालिटीज आपके अंदर. अच्छा, वहां मेरे बच्चे हैं, जब आप लीव करते हैं मुझे पता है. अच्छा अगली बात सुन ले, मैं जो आपको बात कहने लगा वो जो है, ऑफ कोर्स माय फादर वाज इलिटरेट. वो तो इतने पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन वो कंप्रोमाइज नहीं करते थे. उन्होंने मुझे कहा, आई टोल्ड यू इन द क्लास दैट इफ आई एम अ टीचर बिकॉज़ यू नो ऑर्डर ऑफ माय फादर, ही वांटेड मी टू बी टीचर. तो उन्होंने मुझे कहा उस वक्त, उन्होंने मुझे कहा, इट वाज 1981, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो यार, मैं अब कितनी अरसा इस दुनिया में, लेकिन जब तुमने क्लास में जाना है तो वो जो 60 बच्चे आपको देख रहे होंगे, उनकी 120 आईज विल बी लुकिंग एट यू. और आपने उन्होंने कह दिया तो अभी हम आपको ना समझो. हाँ, तो इसलिए बेटा बात यह है कि आप किसी को तो रोल मॉडल बनाए. हम कहते हैं यार कि क्या ब्यूरोक्रेट ही ऐसे नहीं. इवन इफ आई एम एट होम, ये मैंने एक जगह मखसूस की हुई है, दिस इज द प्लेस ऑफ माय सन. कुर्सी मुर्सी इस्तेमाल करता हूँ, तो वो मैं रोज तैयार होकर जब आता हूँ तो मैंने कहा नहीं यार, आज मेरा लेक्चर है, आज मैंने बिल्कुल तैयार होना है, मैं मेंटली भी, इसलिए फिर लेक्चर भी अच्छा चलता है. फिर आप लोगों को भी पता चलता है इसलिए आज से कि यार अगर सर लेजी नहीं है, सर सुस्त नहीं है, उनके ऊपर कोरोना वायरस जो है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो हम आए ना. इसलिए ये मेरी ड्यूटी है. जब मैं ड्यूटी पे करने आ रहा हूँ तो फिर मुझे ऑनेस्ट होना चाहिए. तभी तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था. ओके, थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. नो प्रॉब्लम सर. यू टू सर. ओके, अल्लाह हाफिज.